Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision. Welcome to all of you again a new session of NTSE Stage I. As we know that this exam is conducted in two stages, that is NTSE Stage I and NTSE Stage II. So we are doing this session for NTSE Stage I, and we know that there is science section that is going to be there in your exam, and in the science section we have to learn about physics, chemistry and biology. So what in this session we are going to do, we'll discuss a topic of bio section which comprises of the syllabus of class 9th. See, for this exam in TSE, the syllabus comprises of both the classes, class 9th and class 10th. So for NTSE Stage 1, you have to learn the syllabus of class 9th as well. So in today's session, आज हम एक टॉपिक उठाने वाले हैं from the syllabus class 9th of from biology. ठीक है, एंड आई गेस आप में से ये चैप्टर सबने नहीं पढ़ा होगा बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक दिस टॉपिक वाज एराडिकेटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर एनटीएससी एग्जाम. सो दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये टॉपिक आपके क्लास 9th का है, बट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है. Right? So should we start the topic? Yes? Yes, ma'am. I guess आप में से ये टॉपिक किसी ने क्लास 9th में नहीं पढ़ा होगा, राइट? बिकॉज आपका ये टॉपिक रिमूव कर दिया था सीबीएसई की तरफ से ड्यू टू द पेंडेमिक. द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड फॉर योर एग्जाम्स. So this topic was removed. So we are going to learn a bit about this topic which is necessary for your NTSE exam for stage 1. ठीक है बेटा? So we'll start the topic. The topic is just diversity in living organisms. So write down the heading of the topic in your notebooks. Everyone, whatever I told you today, please do write in your notebooks as well. ठीक है? This is all going to be important for you for the exam. Now, diversity in living organisms की जब हम बात करते हैं, we know that there is a wide variety of organisms present on this earth. So if we talk about wide variety, so what is this wide variety of organisms? This is diversity. Diversity means enormous variety of organisms present on this earth. So diversity means variety of organisms. ठीक है? Diversity means variety of organisms. Now, you know what, like if there are different types of organisms present in different places, so how do we know about that? There is then need the classification, because on the basis of classification, we can understand them well, that in which particular group or set we'll place on the basis of certain features or on the basis of similarities or dissimilarities present between them. ठीक है? तो diversity means variety of organisms, and so to study these variety of organism, there need of classification. There is the need of classification then. ठीक है? So we can say that diversity is the need of classification. Now, what does that classification means? Classification means, you know, classification is a practice of classifying the organisms. Classification is a practice of classifying the organisms. In what manner? That is all about classification. So basically, classification is the arrangement of organisms into set or groups based on their similarities and dissimilarities between them. So please note down in your books, what is classification? Classification is an arrangement of organism into set or groups according to
similarities and dissimilarities present between them. ठीक है, तो उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज है, कितना डिसिमिलर है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ है इनटू सेट और ग्रुप्स. दैट इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन. एंड व्हाई वी क्लासिफाई देम? बिकॉज देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, right? So now can we have a view that, yes, everybody has written this line, that classification is the arrangement of the organisms into set or groups according to dissimilarities or similarities between them. Yes, everybody has written that? Okay, moving on to next, that why classification is done. Yes, I have told you that it, number one, what is the significance of classification? नंबर वन इज इट मेक्स द स्टडी ईजियर. ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में है, कौन से फाइलम में है, तो आपके लिए स्टडी उसकी बहुत ईजियर हो जाएगी. क्यों? एज सुन एज यू हैव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो आपको उस फाइलम के सारे फीचर्स मालूम होंगे अगर, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस ऑर्गेनिज्म में ये सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं. सो इट मेक्स द स्टडी ईजियर. इट मेक्स the study easier, है ना? हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर फाइलम और ग्रुप में रख देंगे, so it will be very easier to know that what are the feature present in that particular organism, present in a particular group or phylum, right? Now what is the other thing, what is the other significance of classification? One more, you know, it is also essential for establishing the interrelationship between the organisms, है ना? दो organisms के बीच में, just a moment, दो organisms के बीच में it also establish the interrelationship, है ना? With the help of classification we can, you know, it is very important to establish a relationship between the different organisms present in different phylum or groups. So one more point we can write, that it is essential, that means classification is essential to establish the interrelationship between the organisms, right? So this is one point which can also be studied with the help of classification. ठीक है? Next one very important again, it also establish the hierarchy of group of organisms present between them. मतलब कि उनका जो organisms है वो किस hierarchy में हम arrange कर सकते हैं, that also is being done with the help of classification. So what we'll write, it also establish what? Hierarchy. It also establish hierarchy of group of organisms. ठीक है? तो ध्यान रखनी है मेरी बात कि what it can be done with the help of classification. It makes the study easier. It tells us the relationship between the different organisms. It also establishes the hierarchy between the different organisms. So with the help of classification, we can do all these things in a very quick and easier manner. ठीक है? So this is why classification has a great significance. So please do write in your notebooks. Yes, everybody has written that? Okay, moving on to next. Now, when we say hierarchy, so we use a word also that is called as taxonomic hierarchy. Ma'am, can you please show the previous slide for a second? Yes, beta? Ma'am, can you please show the previous slide for just a minute. Last one. Okay, beta. It also established the hierarchy of group of organisms. ठीक है? It is also, classification is also important for establishing the hierarchy. That means कि कौन सा organism को हम कौन से phylum में रख सकते हैं. Hierarchy, we'll learn in a minute that what is taxonomic hierarchy. Hierarchy means from top to bottom.
Right, beta? Okay, ma'am. Thank you. Okay, should we move on to next? Yes, ma'am. Just a minute. Yes, taxonomic hierarchy. Now, when we use the word this one, taxonomic, again a different thing about this. See, what is taxonomic hierarchy? It is a framework. It is a framework of organizing the organisms from the higher to the lower category. है ना? So write on one line. It is a framework. It is a framework in a group of hierarchy classification from higher to lower order. From higher to lower order. है ना कि किस तरह से हम organisms को place करते हैं from higher to lower order in a group of hierarchy classification. It is a framework in which in a group of hierarchy classification from higher to lower organism and the organisms are classified. ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात, अगेन इंपॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल there are different taxons. See, when we heard the word taxonomic, there is the word that comes in our mind, that is taxon. ये मैंने पहले भी एक सेशन में आपको बताया है. What is taxon? That establish the taxonomic hierarchy. Now, what is taxon? Taxon is a rank or category. Is a rank or category in a hierarchy group of classification. Abhi, I'll show you in a minute that in a hierarchy group of classification, what is taxon? Basically, it is a rank or category in a hierarchy group of classification from the higher order to lower order. Yes? Understood? Everyone? समझ आ रहा है सबको? Should I move on to the next slide? Please wait. Okay, beta. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे टॉपिक में, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एनटीएक्स एग्जाम, दैट इज ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? Ma'am, is it rank or category? It is a rank or category in a hierarchy group of classification. In a hierarchy group of classification. Right, बच्चे? And ma'am, in the first point, what is after lower? Lower order. It is lower order. Lower order and organisms are classified. Exactly. ठीक है? Yes, beta. Who's this? What's the difference between taxonomic hierarchy and taxonomy? Okay, taxonomy, taxonomy is a science. Taxonomy is a science that deals with these kind of, taxonomic hierarchy. Okay, bacha? Yes, ma'am. Right? Should we move on to the next slide? Have you written all? Yes, ma'am. Okay. So I told you that taxon is any rank or category in a hierarchy group of classification. So can we discuss now what is hierarchy group of classification? देखो, जब हम hierarchy group of classification की बात करते हैं, we start from taxons, and the first taxons is kingdom. Then next is phylum, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. है ना? ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, because it was a question in your exam NTT Stage I. Some question was based on that. So I told you that this is the hierarchy group of classification starting from the higher order to the lower order or rank. So if I talk about the rank or taxon, what is kingdom? Kingdom is a taxon because it has occupy a particular place in hierarchy group of classification, and it is the highest taxon. It is the highest taxon. Meaning by that, if I ask or if I say we are talking about kingdom Plantae,
That means all the plants present on this earth comes under kingdom Plantae. That is why we say that kingdom is the highest taxon. Similarly, if I say kingdom Animalia, so what does that mean? All the organisms present on, all the animals present on this earth comes under kingdom Animalia. That is why again we say the kingdom is the highest taxon. Right, all of you? So, similarly, kingdom is the taxon, phylum is the taxon, class is the taxon, and so on. Now, if I ask you, what is the lowest taxon? तब क्या बोलोगे आप? What is the lowest taxon? Yes, yes, absolutely. So, lowest taxon is species. Very important point. Question आपका आ सकता है और कई बार already आ चुका है. I guess in some paper, previous NTSE paper, we have discussed this question, that what is the basic unit of classification. So please do write in your notebooks as well. Species is the basic unit of classification. ठीक है, ध्यान रखनी है हमें ये बात. Species is the basic unit of classification, and one of the time question is already there in the exam from this topic. Simple, the question was like this, which is the following is the basic unit of classification, that is species, and one of the option was there in the options, that is species. Right, all of you? समझ आ रही बात? Yes. Family, after family it is genus. Genus. ठीक है बच्चा? So lowest taxon is species, highest taxon is the kingdom. Under kingdom, if I talk about Animalia, all the animals comes. Species is the lowest one and it is the basic unit of classification. ठीक है? Species के लिए हमें एक बात और भी जानना ज़रूरी है, जिस पे question आ भी चुका है और आ भी सकता है, that how do we classify species? What is the basis of species? So write down one line again in your notebooks, that species are the, write down, species are the group of, I'm dictating, group of organism which are morphologically similar, and can interbreed among themselves and produce of its own kind, or can produce offspring. एक ही बात है. Can produce, one more important, when I'm saying of its own kind, you can also write in a manner, and can produce fertile offsprings. Again an important point. Fertile offsprings. ठीक है? So meaning by that species are something under which gene flow could be there. Gene flow means they can interbreed among themselves and can produce of its own kind, or can produce the fertile offsprings. ठीक है, बात समझ में आ रही है? Again in some session with NTSE Stage I, मैंने आप लोगों के साथ कोई पेपर previous year discuss किया था, and I remember there was a question like this, that which of the following lines best describe the species, and one of the option in the one of the line in the options was like that they can interbreed and can produce of its own kind, or fertile offsprings. Same line was there in the options, and they were asking that which of the following option best describe these species. Again important one, can be asked again in a different manner. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए that they are closely related organism, or they are morphologically similar, which can interbreed among themselves and can produce fertile offsprings or of its own kind. ठीक बात है? समझ आ रही कहानी? Yes? ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर समझ आए तब. ठीक है, थोड़ा सा आपको you will learn about the different animals which is present on this earth, and I'm 100% sure आपने कभी उनके नाम नहीं सुने होंगे पहले, जो कि हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे later when we'll discuss the kingdom Animalia and its phylums. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? Everything? Should I move on to the next slide, beta? Yes, ma'am. Okay. अभी I'm going to ask questions as well. जितना भी हम पढ़ रहे हैं अभी, I'm going to ask questions as well. Right?
चलिए, so that was about the different taxons present in the taxonomic hierarchy of classification. Now, one thing again I wanted to tell you that about nomenclature. I guess in some session I have told you that. बता सकता है आप में से कोई मुझे what is nomenclature? Very simple it was. Any one of you? Daksh, can you? Naming a group of organisms. You're right. Naming a group of organism क्यों? Naming an organism is in nomenclature, है ना? Simple. Naming an organism or naming an individual. So write down naming an organism or naming an individual. मतलब किसी भी individual को नाम देना. That is nomenclature. And one very important point, it should be universally accepted. It should be universally accepted. है ना? अगर अपने अपना सभी नाम रखेंगे, साइंटिफिक नेम रखेंगे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है हमको, सब अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे तो. बट it should be in one name of a particular organism, scientific name of a particular organism, which is universally accepted. ठीक है? अभी I'll give you certain features जिसकी basis पे हम nomenclature करते हैं later. But before that, one more term I wanted to tell you, that is binomial nomenclature. Binomial nomenclature. देखो, nomenclature means naming an individual. किसी भी organism को उसका scientific name देना, that is nomenclature. Now, when we talk about binomial nomenclature, देखो, as the name suggests, by means हम इस तरह से nomenclature करें that it should have two names. By means it should have two names. ठीक है? Two names means like one name would be genus and the other name would be species. ठीक है? This is one of the rule of the binomenclature. Actually, there are certain rules on the basis of which we have scientific names of the different organism. एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी है that there are actually certain rules. और वो rules किसने बनाए हैं? There is an organization that is called as International Code of Nomenclature. लिख लो ये बात, ICN. ICN stands for International Code of Nomenclature. है ना? तो International Code of Nomenclature has given certain rules on the basis of which we will write or we will give the scientific name for a particular organism. Scientists have followed those rules which is given in ICN and then establish a particular name, a scientific name for a particular organism. ठीक है? तो one of such rule is that it should have two names. Two names means one should be genus, the first one should be genus. ये भी ध्यान रखनी है हमें बात. First one should be genus and second one should be species. This is the one rule which is been followed by doing the nomenclature of any organism. ठीक है? तो rules हम पढ़ेंगे अभी, but before the rules I wanted to tell one more thing, that this binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. ठीक है? ये किसने दिया हमको? Carolus Linnaeus. He has given this binomial nomenclature. He is also known as the father of taxonomy. Father of taxonomy. One of you asked me, ma'am, what is taxonomy? है ना? अभी थोड़ी देर पहले ही आप में से मुझसे किसी ने पूछा था. देखो, taxonomy is a science. है ना? When we talk about the difference between the taxonomic hierarchy and taxonomy is a science that deals with the nomenclature, that deals with the identification and classification of an organism. ठीक है? टेक्सोनॉमी वो साइंस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका नाम देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन वी क्लासिफाई इनटू टू पर्टिकुलर ग्रुप और सेट और फाइलम. दैट इज टेक्सोनॉमी. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस Linnaeus. So you can write the definition of taxonomy as well. Again, it can be asked in your exam. I am dictating one line that what is taxonomy. Write down that line, everyone. Then we'll discuss about certain rules of the binomial nomenclature. ठीक है? समझ आ रहा है सबको? Yes? चलिए, write down the definition of taxonomy. Taxonomy is a science that deals with
Okay, I'm writing here. It deals with nomenclature. Oops. Taxonomy is a science that deals with nomenclature, identifying and classifying the organism. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, नाम देना, आइडेंटिफाई करना, दैट इज टेक्सोनॉमी. ठीक है. So taxonomy is a science, and who has given this? Who is the father of taxonomy? It is Carolus Linnaeus, and he only proposed this nomenclature, that is binomial nomenclature. So now we are going to discuss some rules which is given by International Code of Nomenclature. Following that rules, the binomial nomenclature has done. So we'll discuss some rules. Should I begin? Have you written all this, everybody? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. चलिए हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. राइट डाउन एवरीबॉडी, रूल्स फॉर binomial nomenclature. ठीक है, तो one rule I have already told you, it should have two names. Two names में the first will be what? Genus, and the second name will be species. जैसे मैंने आपको एक सेशन में बताया था पहले भी, if I took our name, साइंटिफिक नेम क्या होता है हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम? यस, व्हाट इज आवर साइंटिफिक नेम? होमो सेपियंस. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. तो होमो बताओ मुझे क्या होगा इसमें? व्हाट इज होमो? होमो इज व्हाट? जीनस, एंड सेपियंस इज व्हाट? स्पीशीज. ठीक है, फर्स्ट नेम वुड बी जीनस एंड द सेकेंड नेम वुड बी स्पीशीज. इन होमो सेपियंस, होमो इज जीनस एंड सेपियंस इज स्पीशीज. सो दिस इज नंबर वन रूल. नंबर टू, हम जीनस की अगर बात करें, I'm going to tell you all the rules in reference to this name only, our name, that is Homo sapiens. So if we talk about genus, तो first letter genus का कैसा होना चाहिए? अपर केस में. तो देखो मैंने जानबूझ के इसलिए deliberately I have written in this manner, H is capital, upper case. ठीक है, and स्पीशीज का कैसा होना चाहिए? इट इज फर्स्ट लेटर विल बी इन लोअर केस. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन अगेन, है ना? ठीक है, तो ये भी एक रूल है, क्योंकि आपसे सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो आपको कोई भी साइंटिफिक नेम दे देंगे, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में इस तरह से लिखा होगा. दिस इज इन रेफरेंस टू ह्यूमंस. आई एम टेलिंग यू दैट होमो सेपियंस माइट बी, एक ऑप्शन में दोनों एस कैपिटल कर दें, एक ऑप्शन में दोनों एस लोअर कर दें, बट वन ऑप्शन वुड बी देयर लाइक दिस, इन विच वन इज द कैपिटल, दैट इज जीनस फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल and species first letter will be in lower case. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, बट आप उसको सही तब कर पाएंगे unless and until you know this fact or this rule of ICN, right? समझ आ रही बात सबको? Yes. Third point. What is the third point? If it is written handwritten, अगर हमने इसको हाथ से लिखा है, if it is handwritten, तब क्या होगा उस केस में? If it is handwritten, it should be underlined separately. It should be underlined separately. जैसे for example, again I'm coming back to here, that is Homo sapiens. This is the proper way. It should be underlined separately. But if it is typed, है ना? अगर ये typed होगा, तब it should be in which font? It should be in italics.
है ना. तो अगेन क्या कर देंगे, आपको एक ऑप्शन में इटैलिक्स फॉन्ट में नहीं रखेंगे, आपको सीधे स्ट्रेट अवे सिंपल फॉन्ट कर देंगे. सो दैट वुड नॉट बी योर ऑप्शन. योर ऑप्शन वुड बी, if it is in typed, it should be in italics. So italic form में अगर scientific name दिया हुआ है, so that is your correct option. ठीक है, समझ आ रही बात सबको? Yes. After underline, it is written separately. Yes, after underline, it is written separately. I have written short. Okay, abbreviated form. चलिए, तो if it is handwritten, it should be underlined separately. If it is typed, it should be in italics. ठीक है? Next point पे आ जाते हैं. From which language this scientific name has been taken? So, it is from the language. कौन सा यूज किया हुआ है? It is the Latin language. ध्यान रखनी है ये बात. Again, important point. The scientific name has been taken from Latin language. Why so? क्यों Latin language लिया है? Because this is a dead language. Dead language means कि it is of no more in use. अगर कोई language इतना use में नहीं होगा, so there will be no scope of modification. तो modification नहीं है, मतलब एक बार scientific name जो हमारे डाल दिया हमने, that would be the scientific name forever. It was not going to modify. So we'll use that language which is a dead language. And the language that is used to write the scientific names, that is Latin language. So please do remember this point as well. तो हमने कौन कौन से 4 points पढ़े? That is, first there should be 2 names. First is genus, second is species, right? Number 2 is G, the first letter of the genus will always be capital. The first letter of the species will always be in lowercase. ठीक है? Then if it is handwritten, it should be underlined separately. If it is typed, it should be in italic font. Last one, that it should be taken from Latin language, because Latin language is the dead language. समझ आई यहाँ तक कहानी सबको? Yes? Everybody has written? Yes, ma'am. ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस अभी, है ना? बिल्कुल ध्यान से अटेंटिवली सुनना एक एक चीज, because whatever we are discussing, one or the other time, everybody there was a question, and we have discussed the questions as well from this topic in previous sessions. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. One more, you can write, जब हम scientific name लेते हैं, किसी भी रखते हैं साइंटिस्ट किसी भी organism का, तो it should have minimum 3 letters and not more than 20 letters. ध्यान रखनी है ये बात, not more than 20 letters. ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, हमें ध्यान रखना है. इट शुड बी मिनिमम 3 letters एंड नॉट लेस देन, मतलब लेस देन 3 letters नहीं होनी चाहिए, मोर देन 20 letters नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वन मोर रूल दैट इज बीन देयर, एंड द लास्ट वन दैट वी आर टेलिंग यू, that with the scientific name, the scientist who has given the name, that can also be added after the scientific name. Meaning by that, there is a name that is Homo sapiens. Who has given this name? This name is given by, this scientific name of humans is given by Linnaeus, Carolus Linnaeus. So it can be written as in an abbreviated form, Lin. That means scientist who has given the name can be written in the scientific name at the end of it. ठीक है, तो Homo sapiens Lin can be added. Lin can be added at the end of the scientific name. ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात. So this is the last rule that I was about to tell you. These are the rules that a scientist should follow while nomenclature of an individual. Is it okay to everyone? लिखा सबने? Yes, ma'am. So should I move on to the next slide? Yes. Everyone? चलिए, so that was all about the rules. Next is classification of organisms. देखो, when we talk about classification of organisms, we need to know about different kingdoms on which the organisms are classified. है ना?
So there are different kingdoms given by the different scientists. Actually, there are different scientists who proposed different kingdoms to classify the organisms. Jesse, for example, first what comes is two kingdom classification. Two kingdom classification means there is only two kingdom present in two kingdom classification as the name suggests. And what are the two kingdoms? Kingdom Plantae and kingdom Animalia. What does that mean? है ना? What does that mean? That means all the plants which is present on this earth comes under kingdom Plantae, and all the animals which is present on this earth comes under kingdom Animalia. So this is two kingdom classification which is firstly given, and it is given by Linnaeus. ठीक है, it is given by Linnaeus. ध्यान रखनी है ये बात. Now next again one more kingdom classification, that is three kingdom classification. तो आप थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना that who proposed these different classifications in which the organisms are classified. ठीक है, तो three kingdom classification was given by Ernest Haeckel. So please do remember the name. And what is the next third kingdom that is added in three kingdom classification? ये बात ध्यान रखनी है. तो इसमें कौन कौन सा आ गया आपका? Kingdom Plantae तो already was there, है ना? तो Kingdom Plantae is there. Next is what? Kingdom Animalia is there. And what is added in three kingdom is Kingdom Protista. ठीक है, Kingdom Protista को यहाँ पे add किया गया. Right? Now in this three kingdom classification, we know that Plantae में सारे plants will come, Animalia में सारे animals will come, Protista में what comes in is the unicellular organism. But यहाँ पे एक आपको बात ध्यान रखनी है, there is an organism which is called as Euglena. ठीक है, Euglena is not getting place in any of these three kingdoms. ठीक है, and as we know, as we have discussed in previous sessions, that Euglena is a connecting link between plant cell and animal cell. ध्यान रखनी है ये बात हमें. But this organism does not found any place in these three kingdoms. ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी NTSE एग्जाम में पूछा जा चुका है, that which of the following organism does not getting place in any of these three kingdoms in three kingdom classification. Answer was Euglena. So please do remember. अच्छा, अभी मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मैंने प्रीवियस सेशंस में आपको जरूर बताया था that why Euglena is called as plant cell. बता सकते हो Euglena को हम plant cell क्यों बोलते हैं? Anyone from the class? Yes, Daksh, Siddhant, Disha, Samriddhi. Why we say Euglena as plant cell? No? Euglena is called as plant cell because it has plastids. And plastids are the cell organelles which is present only in plant cell. सही बात है बेटा? ये है ना? तो plant cell क्यों बोलते हैं? Because it has plastids. Then why we call it as animal cell? भाई जब प्लास्टिड है तो हमको सिर्फ प्लांट सेल ही बोलना चाहिए, फिर हम इसको एनिमल सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट लैक्स सेल वॉल. बिकॉज इट लैक्स सेल वॉल, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं बनी प्रेजेंट है. इफ एनी सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, डेफिनेटली विल कंसिडर दैट सेल एज द एनिमल सेल. दैट इज व्हाई वी कंसिडर दिस ऑर्गेनिज्म एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना, if we are saying that it is a plant cell and has plastids, tab ye that means if it is plant cell and has plastids, it will perform which mode of nutrition? Yes, किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा इसका अगर ये प्लांट सेल है और प्लास्टिड्स भी है? यस आलिश,
Autotrophic, absolutely. It has autotrophic mode of nutrition then. बिल्कुल सही बात. अब अगर ये एनिमल सेल है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, तब कैसा न्यूट्रिशन होगा इसका? Yes? Heterotrophic, absolutely. That means it can undergo both types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Such nutrition is called as mixotrophic nutrition. So that means Euglena undergoes mixotrophic nutrition. ठीक बात है, because it can undergo both the type of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic. Such nutrition is called as mixotrophic, and Euglena undergoes mixotrophic nutrition. ठीक है, so please do remember all these facts. Questions can be framed on that. Clear up till here? Yes, Daksh, your voice is not reachable to me. Beta, a little louder. Please speak a little louder. क्या पूछ रहा है बेटा? Can you tell the name of the person who proposed these three kingdoms? Three kingdom is Ernest Haeckel. लिख लो ERNST. Ernest Haeckel. HAECKEL. ठीक है? Ernest Haeckel proposed three kingdom classification. Yes, everybody has written. What is written on this slide? Should I move on to the next one? Yes? चलिए आगे बढ़ते हैं. So we were discussing about three kingdom. Next is what? Four kingdom classification. Write down four kingdom classification. So if we talk about four kingdom classification, so already we have, what are the kingdoms that already we have? Kingdom Plantae, Kingdom Animalia, Kingdom Protista. This is already we are having in three kingdom classification, and you have to keep it in mind also that after two kingdom, in three kingdom, which kingdom is added? It is Protista. After three kingdom, in the four kingdom, which kingdom is added? It is Kingdom Monera. It is Kingdom Monera that is added in four kingdom classification, and it is proposed by, write down, it is proposed by, just a minute. It is proposed by Copeland. ठीक है, तो हमें नाम भी ध्यान रखनी है किसने प्रपोज किया है, और उस किंगडम में, उस फोर किंगडम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में विच किंगडम इज एडेड, प्लीज डू रिमेंबर. वेरी सिंपल थिंग्स, बहुत जल्दी याद हो जाएंगी. तो बहुत सिंपल सी थोड़ी सी चीज़ें हमें याद रखनी है, जिसमें आपके एनटीएससी स्टेज 1 में क्वेश्चंस, क्योंकि व्हेन वी हैव डिस्कस दिस सेशंस इन प्रीवियस सेशंस, द पेपर यू फाइंड दैट क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट. देयर आर इजी क्वेश्चन, बट अनलेस एंड अनटिल वी स्टडीड देम प्रॉपर्ली. तो प्लीज डू लर्न द नेम्स, the kingdoms that is added in further kingdoms and who proposed that. That is the basic idea, you have to keep it in mind. ठीक है, next is, that is 5 kingdom classification. This is important because up till now we studied this kingdom classification, and this is proposed by R.H. Whittaker. Again, तुम लोगों ने अगर याद है तुम लोगों को, इस पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है NTSE स्टेज 1 में. Which of the following proposed, which of the following option में जो given था, that who proposed 5 kingdom classification. याद है तुम लोगों को एक क्वेश्चन था, it was like that, who proposed 5 kingdom classification, and the answer was R.H. Whittaker. In the option it was given as Whittaker. If you remember that? Yes. है ना. तो अभी इसमें फोर किंगडम्स आप एज इट इज लिख दो, दैट इज ऑब्वियस. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, केस फॉर किंगडम. ठीक है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया. अभी बताओ मुझे, आप में से कौन बताएगा कौन सा किंगडम ऐड होगा इसमें? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा. अभी बताओ, which is the last kingdom, that is the yes, it is the kingdom fungi that is added in 5 kingdom classification. So please do learn that, again important point.
ठीक है, and it was proposed by R.H. Whittaker. And kingdom Plantae, kingdom Animalia, kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi, these are the 5 kingdoms which comes under 5 kingdom classification. ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान ले. Yes बेटा, who's this? Now, what is kingdom Monera? What you said? And what is kingdom Monera? We'll discuss in a minute what is kingdom Monera and what is kingdom Fungi. We'll discuss. बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि इन पर्टिकुलर किंगडम्स विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट. ओके दिशा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टार्ट फ्रॉम किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं. ओके, आई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड राइट अगेन ऑल दीज किंगडम्स. एवरीबडी हैज रिटन व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड on the screen? Yes? So okay, I'll start with kingdom Monera. So we are discussing 5 kingdom classification in a very summarized manner. First is kingdom Monera. Why I'm taking this first, I'll also tell you that. So kingdom Monera is one of the kingdom that includes in 5 kingdom classification. ठीक है बेटा? तो kingdom Monera में कौन से organisms आते हैं? That is unicellular. Disha, this is what you're asking now. What is kingdom Monera? Yes, ma'am. Okay, kingdom Monera में कौन से organisms आते हैं? Unicellular prokaryotic. I guess you understand the word prokaryotic. समझते होगे? है ना? Lacking nuclear membrane. Yes, ma'am. Yes, prokaryote is the actually prokaryotic cell is the incomplete cell. Why we say it is an incomplete cell? Because it do not have well-defined nucleus. It has incomplete nucleus. It do not have nuclear membrane. Such nucleus is called as what? It is called as nucleoid. ध्यान रखनी है ये बात भी important point. ठीक है, आपसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और इन केस ऑफ मोनेरन्स? सो योर आंसर विल बी न्यूक्लियोइड. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट होता है. वाई? बिकॉज इट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए हम इस सेल को भी इनकम्प्लीट सेल बोलते हैं. ठीक बात है. So such nucleus, आप इसको और भी नाम से जानते होंगे. That is called as Jennifer. नाम सुना आप लोगों ने इसका? Jennifer. So Jennifer, nucleoid, primitive nucleus, incomplete nucleus. This is all name given to the nucleus present in the prokaryotic cell. ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के 2-3 फीचर्स we'll discuss only, which is important for your exam. First, it is in unicellular, one cell organisms present है. प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें इस टाइप का न्यूक्लियस है. एंड वी नो दैट इफ द सेल इज प्रोकैरियोटिक, तो कैसा राइबोसोम प्रेजेंट होगा इसमें? विच काइंड ऑफ राइबोसोम? यस, इट हैज 70S राइबोसोम. तो किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इट हैज 70S राइबोसोम्स. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. अगर आपको ये मालूम होगा कि इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल है, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल हैज 70S राइबोसोम्स. ठीक है. वन मोर थिंग, अगेन प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं. वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल इज एन इनकम्प्लीट सेल. इट डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, है ना. सो वन ऑफ सच स्ट्रक्चर इज माइटोकॉन्ड्रिया विच इज एक्चुअली एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ऐसा क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में विच एक्चुअली हेल्प्स इन ATP सिंथेसिस और provides the energy to the cell? So can you tell me which structure is present or which is actually the substitution of mitochondria in prokaryotic cell? बता सकते हो आप में से कोई? Substitution of mitochondria in prokaryotic cell which gives energy to the cell or which synthesize ATP for the cell. So that is what? Mesosomes. Write down. Mesosomes are the substitution of mitochondria in prokaryotic cell. And mesosomes किस structure से बना है? Simple, you need to know one line. Infoldings of plasma membrane. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना. These are the infoldings of plasma membrane where ATP is synthesized in case of prokaryotic cell. ये बात लिख लो अपने नोट्स में.
that these are the infoldings of plasma membrane where ATP is synthesized in prokaryotic cell. समझ आ रही कहानी सबको? Yes? Ma'am, can you explain what is 70S ribosome? बेटा 70 एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि 70S और दो टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम्स, है ना. तो 70S राइबोसोम्स ब्रेक डाउन इन, एक्चुअली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन 2 यूनिट्स, subunits. Ribosomes are the non-membranous structure. Ribosomes की surround membrane present नहीं होती. They are present in the form of subunits, and even those units are not together. These units are remains in the cytoplasm, but at the time of the formation of proteins, these two subunits assemble and form the proteins. ठीक है? So 70S when actually present in the two subunits form, they are what? 30S and 80S. Sorry, 30S and Not 50 years. absolutely beta, it is 50S. Just a minute. It is 50S. ठीक है? और जब आपका 80S दो सब यूनिट्स के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इट इज 40S एंड 60S. एब्सोल्युटली. ये मैंने आपको तब भी बताया था कि दिस इज नॉट द एडिटिव वैल्यू ऑफ these are present in this form, but these are not the additive value. So basically 70 has its two subunits, that is 30 and 50S, and 80S has two subunits, that is 40S and 60S. ठीक है? इसको डिटेल में हम तब पढ़ेंगे when we'll discuss the structure of ribosomes. तभी आपको, actually there are different types of ribosomes, different types of RNA present in the ribosomes. Ribosomes की बात करें, so there are rRNA present which is called as ribosomal RNA. समझ आ रही बात? दक्ष, you are asking this now? Yes, ma'am. ठीक है? तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो that they break down into two these subunits and these break down into two these subunits. 70S is the smaller ribosomes. This is again one difference. 70S is the smaller ribosomes, 80S is the larger ribosomes comparatively, relatively. ठीक है? 70S is present in the prokaryotic cell and the organelle within the cell organelle. ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था question in some session, that which organelle present inside the cell organelle. This is ribosomes present in mitochondria in animal cell and the ribosomes in chloroplast in plant cell. ठीक है? तो there again it is also 70S types present. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. So that was about the ribosomes. हाँ, ribosomes पे कई बार कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. लास्ट सेशन में मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि क्या क्या बातें हमें याद रखनी है अबाउट राइबोसोम्स, जिसपे नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस आर देयर. और मान के चलो कि आपका राइबोसोम्स में एक क्वेश्चन हर साल आता है NTSE स्टेज 1 में. एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो फ्यू पॉइंट्स विच इज टू बी रिमेंबर फॉर द एग्जाम. आई गेस यू हैव ऑल नोटेड दैट. येस और नो? हाँ, लास्ट. ओके. So mesosomes are the substitution of mitochondria in the prokaryotic cell, that is the infoldings of the plasma membrane. And last line which I wanted to tell you, that is जब हम इसकी बात करते हैं मोनाडन्स की, तो मोनाडन्स के केस में ध्यान रखना है important point, bacterians are the sole members of the kingdom Monera. मतलब कि मोनेरा में जितने भी organisms present हैं, these are all bacteria. So what in a summarized manner, in just one line, what we can say, bacteria are the sole members of the kingdom Monera. ठीक है? तो ध्यान रखनी है ये बात. Clear है? Bacteria could be different types of bacteria that you need not to know as of now. एक चीज ध्यान रखना बस, that bacteria is actually mode of nutrition की बात करें तो bacteria could be even photosynthetic. है ना? फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं. वन सच बैक्टीरिया विच इज फोटोसिंथेटिक. यस बेटा? Cyanobacteria. यस, कॉमनली वील कॉल इट एज BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन algae. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है? BGA, ब्लू ग्रीन algae or cyanobacteria, one and the same thing. So please do learn that bacteria even can perform the function of photosynthesis. One such bacteria is BGA, that is cyanobacteria. And this is a kind of example of Monera. Exactly. Yes, you can say this. Bacteria are the sole members and this BGA is one of the example of bacteria which can undergo the process of photosynthesis. ठीक है बच्चे?
एक आपने और भी सुना होगा, दैट माइकोप्लाज्मा, सुना है नाम? माइकोप्लाज्मा, यस, यू हैव हर्ड दिस? माइकोप्लाज्मा बिल्कुल सुना होगा आपने सेल टॉपिक में, स्मॉलेस्ट सेल, है ना, विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट सेल without cell wall is mycoplasma, or in short we also call it as PPLO, pleuropneumonia like organism. नहीं सुना तुम लोगों ने ये? Yes, है ना, डेफिनेटली आपने सुना होगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज माइकोप्लाज्मा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द किंगडम मोनेरा, इतना ध्यान रखना, दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जाम. Exactly, mycoplasma भी is one of the bacteria and bacteria are the members of Monera. ठीक है बेटा? Yes बच्चा? प्रोस्टिटा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. प्रोटिस्टा की बात करिए. प्रोटिस्टा? Yes, absolutely. We'll discuss in a minute. After this, we are going to discuss protista only. ठीक है? So, as of now, in case of Monerans, please do remember all these points. This is important for exam. Can be asked. ठीक है? Should I move on to the next slide? आप लोग ने लिख लिया सारा? Yes? चलिए आगे बढ़ते हैं. So that was about kingdom Monera. Right now next is kingdom Protista. Kingdom Protista. ठीक है? देखो, now why I take up kingdom Protista again after Monera? That is because it includes the organisms again which are unicellular, but this time not prokaryotic cell. This time it is eukaryotic cell. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको. इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल. एंड वी नो दैट यूकैरियोटिक इज अ कंप्लीट सेल हैविंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल विद मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, है ना, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ऑल दैट विच इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल, ऑल ऑफ इट प्रेजेंट इन दिस, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, सारा कुछ प्रेजेंट होगा, बट द सेल इज वन सेल, दैट इज यूनिसेलुलर. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें एक बात और क्या याद रखनी है प्रोटिस्टेंस में, दैट प्रोटिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे ख्याल में सिर्फ फोटोसिंथेसिस आता है, बट ऐसा नहीं है. प्रोटिस्टेंस कुड बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस भी हो सकते हैं, that can undergo photosynthesis. Even it could be saprophytic protistans, है ना. Even it could be heterotrophic or parasitic protistans. तो ये हमें ध्यान रखनी है बात थोड़ी सी, heterotrophic और parasitic protistans. मतलब कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है इन केस ऑफ प्रोटिस्टेंस. एक एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे आप ही बताओ मुझे, इफ इट इज यूनिसेलुलर, इट इज फोटोसिंथेटिक, देन द प्रोटिस्टेंस विल बी, कौन से होंगे प्रोटिस्टेंस बताओ? यस, एल्गी. एल्गी नहीं मालूम तुम लोगों को? एल्गी इज व्हाट? यूनिसेलुलर, है ना. इट कुड बी मल्टीसेलुलर एज वेल, बट देन इफ इट इज यूनिसेलुलर इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोटिस्टेंस. ठीक है, and it was definitely algae, other 80% of the photosynthesis on this earth is done by algae only. I guess you know that. मालूम है ये बात? क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में. Which of the following organisms, आ भी चुका है NTSE Stage I में ये, which of the following organisms produces 80% of the oxygen on this earth? That is algae only. So please do remember this important point. Saprophytic protistans, that means the protistans which is unicellular but that depends on dead and decay matter, है ना. तो उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, these are slime molds. ठीक है, ध्यान रखनी है मेरी बात. ओके, देन इसकी बात कर लेते हैं, दैट इज पैरासिटिक और हेट्रोट्रोफिक मीन्स विच इज डिपेंड अदर्स फॉर योर फूड. ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो दी प्रोटिस्टेंस विच इज हेट्रोट्रोफिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यस, अमीबा, है ना, वन सेल्ड है, डिपेंडेंट है
on the other organisms for their food, euglena, ठीक है, then we'll say paramecium. So these are few what heterotrophic or parasitic mode of nutrition. ठीक है, so please do remember any kind of protestant could be there, that is photosynthetic, saprophytic and heterotrophic. ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं. that is kingdom fungi. इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? यस अगेन देखो, अब एक बात यहाँ पे और भी डिस्कस कर लेते हैं. आई टोल्ड यू दैट मोनोडेंस हैव द प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोटिस्टेंस हैव द यूकैरियोटिक सेल. तो अभी हमें ध्यान रखनी है प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट है, उसके बाद हमारे पास जितने भी किंगडम है ऑल हैव यूकैरियोटिक सेल. तो इसमें कौन सा सेल होगा? इसमें इट मस्ट हैव यूकैरियोटिक सेल. That means complete cell is present in case of kingdom fungi. All the organisms present in the kingdom fungi have eukaryotic cell. ठीक है? One again important point. Actually they are mostly multicellular. They are mostly multicellular, but we have an exception over here. Mostly they are multicellular. लेकिन यहाँ भी हम unicellular को मिल सकता है हमें ऑर्गेनिज्म, तो उसका नाम याद रखना. एक्सेप्शन विच इज यूनिसेल्युलर इन केस ऑफ फंजाई इज ईस्ट. ठीक है, ध्यान रखना. मोस्टली दे आर मल्टीसेल्युलर बट द यूनिसेल्युलर फंजाई इज ईस्ट. डू रिमेंबर दिस. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ईदर दे विल बी हेटेरोट्रॉफिक और दे विल बी सेपरोफाइटिक और दे विल बी पैरासिटिक. तो बहुत बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बहुत डिटेल में नहीं आता है एनटीएससी 1 में इस टॉपिक से. तो प्लीज़ डू लर्न फ्रॉम द ऑन अ वेरी सरफेस लेवल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए. अभी हमने देखा जितना भी डिस्कशन हमने किया है आज, उसी टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चंस आर ऑलरेडी देयर इन योर एनटीएससी स्टेज 1 दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस इन डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस, है ना. तो बहुत सरफेस लेवल में आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आए यू कैन डू दैट. सो इट हैज़ ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक. ठीक है, यस समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट इज रादर इट इज किंगडम प्लांटी. प्लांटी में हम सब जानते हैं इट इज विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेल्यूलर, है ना. मल्टीसेल्युलर होते हैं ना प्लांट्स में. कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल, राइट. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वी नो दैट प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. यस, देयर आर सम प्लांट्स विच इज इंसेक्टिवोर्स. सो इंसेक्टिवोरस भी न्यूट्रिशन है, एंड that is why we also say it has parasitic mode of nutrition also, but mostly plants are autotrophic in nature. So please do remember that, but then the exceptions are there. Insectivores and parasitic plants are also there. Last is kingdom Animalia. Ma'am, can you show the previous slide once again? Just a minute, Peter. Right on, Richie. Ma'am, what is written after autotrophic? Autotrophic, insectivores and parasitic. ठीक है, should I move on to the next one बच्चा? Kingdom Animalia. अब देखो किंगडम एनिमलिया तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. क्यों जानते हैं? बिकॉज वी आर द एनिमल्स ओनली, वी आर द अपग्रेडेड एडवांस्ड एनिमल्स, बट वी फॉल इन दिस कैटेगरी ओनली, दैट इज किंगडम एनिमलिया. तो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं हम? मल्टी सेलुलर है ना. हमारे पास कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है. वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड, है ना. सही बात है. we have we are multicellular, we have eukaryotic cell, we are heterotrophic in nature. These are few basic points of the kingdom Animalia, and I guess you all know that. ठीक है. एक चीज हमें और याद रखनी है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हमें याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो
organisms को classify किया है, on what features it is classified. So they are basically, features are complexity of organization. Complexity of organization means that whether the cell have, the organism have which kind of cell, whether the cell is prokaryotic और the cell is eukaryotic, ये ध्यान रखना. तो एक तो क्या है इसका बेसिस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. दूसरा क्या है, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स जरूर डिस्कस किए हैं 5 kingdom classification में, because these are the features on which the organisms have been classified in different kingdoms, kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So these are the basic features. ठीक है. And then it is the, what is the complexity of cell. Cell means whether the organism has unicellular or it is multicellular. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. R.H. Whittaker classified, given the 5 kingdom classification, and he has classified the different organism in 5 kingdom based on these features. That is complexity of organization. The cell is a prokaryotic cell or the eukaryotic cell, or the mode of nutrition, that is which kind of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, saprophytic nutrition, or like parasitic mode of nutrition, all this nutrition included. Then complexity of the cell, either the organism could be unicellular or it could be multicellular. हमें ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. In the first 2 kingdoms that we discussed, that is kingdom Monera and kingdom Protista, both these kingdoms have unicellular organism, but the complexity of the organization is different. In case of monerans, it is prokaryotic cell which is present. In case of Protista, it is eukaryotic cell which is present. And in all the other kingdoms, it is eukaryotic cell with multicellular level of organization. Exception, I already told you that in kingdom fungi, organisms are multicellular with the exception unicellular, that is yeast. Yes? समझ आ रहा है सबको? यहाँ तक क्लियर है? तो जितनी भी मैंने स्टोरी आपको आज समझाई है, ऑलरेडी क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन प्रीवियस सेशंस. Please go through that all that we have discussed today. So that is all about 5 kingdom classification. Now in the next session, what we are going to discuss? We are going to discuss in detail, because आपकी किताब NCERT class 9th में there are 2 kingdoms which is been in detail described, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. तो आने वाले सेशंस में हम यही 2 किंगडम्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं. आई विल स्टार्ट विद द किंगडम एनिमलिया इन द नेक्स्ट सेशंस. व्हाट आर द डिफरेंट फाइलम्स इन दैट किंगडम? दैट इज किंगडम, you know, phylum, different phylums are there, Porifera, Coelenterate and all that. So in the next session, what we are going to discuss about the kingdom Animalia. As if now, इसको अच्छे से पढ़ो, learn करना. I'll ask questions also in the next class. But for this session, that's all for today's class. And I hope you people have understood well, enjoyed the session, liked it. If this session is any way helpful to you, please do like it, share it with your friends and subscribe it as well, so that हमारा जब भी नया वीडियो आएगा, you'll get the notification. That's all for the day. Thank you all.